Zishan Kazi, you're watching Sara Adhikar. Today, a press conference was held by Jeev Sabha, a citizen-led civics platform, and they have given some scientific methods to eliminate rabies death in India. I would like to tell my viewers that there is no cure or effective treatment for rabies once symptoms appear, because the virus causes rapid fatal inflammation of the brain and central nervous system and successfully evades the body's immune response. However, there is a highly effective preventive solution if medical care is sought quickly after exposure. This treatment, known as post-exposure prophylaxis (PEP), is almost 100% effective at preventing the disease if administered before symptoms begin. Sir, my first question for you would be: animal birth control and annual mass anti-rabies vaccination is the only globally proven to break rabies transmission. If this is the solution, kindly tell about the solution to our viewers. How can it can be practically implemented as well? So ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. We have already started implementing that in Mumbai, Goa, various places of the country. Globally, this is very scientifically accepted and proven and validated method. The steps to do that is, let's look at mass anti-rabies vaccination. So you look at your city, you look at the population you have in your city. Let's take Mumbai for an example. Approximately 95,000 dogs are counted in Mumbai as per the last census. Now, if you look at 70% is approximately 70,000 dogs to be vaccinated every year. Mumbai is already doing it. BMC is already supporting NGOs to execute this. It is doable. It is coordinated with the government, NGOs, animal welfare people, feeder community. When we go out for the vaccination drive, we don't do it alone. We take help from the feeders across Mumbai. So if it's doable in Mumbai, it's doable across India. It's now time for us to, all the government bodies, to execute the same solution. कोई नया इन्वेंट नहीं करना. There is a technology already available to do it. Marking of a dog से लेके GPS mapping to population counting, everything is already being done in Mumbai. We just have to replicate that across all cities. I have one more question for you. How would you build a structured animal welfare and public health workforce, thereby creating job opportunities for many people? You have mentioned in your press note that if these preventive measures are taken, there can be lots of employment opportunities for people also working for the welfare of dogs also in various hospitals as well. So kindly list some 3 to 4 important points. How can this employment generators can be implemented so that many people can get jobs also, and rabies prevention also can be done at the same time? I'll give you one example before answering your question. One is when I want to work in an NGO, I start off by being a cleaner. It basic सी job होती है. I do the cleaning, mopping, and if I'm good at my job, I will get to hold animals, catch animals. Second job is, after catching, goes to a medical part, where I start teaching the staff about how to do the wound management, how to do the injections. And वैसे करते करते within 2 to 3 years, that same staff who joined as the job of a cleaner with a 15,000 salary becomes a para-vet at a 25,000 salary. ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, because not a lot of people have exposure to medical treatment for animals, right? So that's one job. Second job is admin, accountants. Then there are jobs of drivers. Then there are jobs of catchers. ये सारे एक proper jobs हैं जहाँ पे आपको कहीं anywhere between 15 to 30,000 you can earn, and this could be your PF accounting jobs. Same thing that we are doing in Mumbai. If we start doing, if the government is allocating funds to NGOs to execute it, NGOs will start hiring enough manpower to execute this kind of thing. To give you a quantum, मेरी जो 2 वैक्सीन टीम है, टोटल मिला के 6 महीने में 30,000 वैक्सीनेशन करती हैं. वो टीम टोटल 15 लोगों की है. यही सेम चीज़ अगर बाकी NGOs भी करने लगे, so that's another set of job that you are adding to the business. What are the initiatives the government of India should take to support your NGO Jeev Sabha Foundation as well, so that these job opportunities can be recognized on a government level as well? There should be a centralized body. AWI currently doesn't have the job and skill development in the scope. ये AWI के scope में आ जाना चाहिए. We should have government bodies also allocating funds for not just NGOs but private organizations to also take schemes from, because a lot of manpower is held by private organizations who can also help you out. Okay, people who get bitten by dog, we see videos on social media that they start behaving like dog itself, and when they go to various hospitals also, they don't get proper treatment. Some do get proper treatment. So do you think that there are medically they are neglected, or there should be improved medication for those people who are affected by rabies as well? So
currently there's a big lack of awareness as to what is the protocol, क्या करना चाहिए. जैसे if somebody gets bitten by any animal, not only a dog, rabies can be transmitted through all mammals. So if you're bitten by any animal, the rabies virus transmits through saliva. First thing you're supposed to do is wash your wound properly with soap and water. सेकेंड थिंग इज़ इमीडिएटली सीक मेडिकल हेल्प. मतलब ये जो हमारे होम रेमेडीज़ या देसी चुस्के जो होते हैं, हल्दी लगा दो, ये लगा दो, इस बीमारी में काम नहीं करते हैं. आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उनका जो प्रोटोकॉल है रेबीज़ का कंप्लीट कोर्स जो वैक्सीनेशन का है वो फॉलो करना सबसे ज़रूरी है. एंड इफ़ यू आर समबडी दैट इज़ एनी वे एक्सपोज, जैसे प्रिवेंटिव रेबीज़ वैक्सीनेशन की हम बातें कर रहे थे, आप एनिमल वेलफेयर वर्कर हो कि आप जस्ट बाई स्टैंडर हो या आप हाई रिस्क एरिया में काम करते हो जहाँ आपके लाइक बिटन होने के चांसेस ज़्यादा है. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, कचरे वाले जो डंपिंग यार्ड्स को साफ़ करते हैं, a lot of animals exist in those areas. So for these people, these preventive rabies vaccination should be made mandatory. Only by doing that can we save lives, because rabies is 100% preventable disease. Thank you so much. Thank you. सर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई है उसको लेके आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी, उसकी जानकारी हमारी जनता को दीजिए. कोई रणनीति इसमें हो नहीं सकती है. पहली बात तो वो जजमेंट अभी तक बहुत रॉ है, बहुत इनएक्यूरेट या इनकम्प्लीट है, जहाँ पे बहुत सारे मिसिंग पॉइंट्स हैं. अगर आप कह रहे हो कि आप पब्लिक प्लेसेस से, हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेजेस से डॉग्स उठा के एक गवर्नमेंट शेल्टर में रख दो, पहले तो वो गवर्नमेंट शेल्टर करो. आप इंडिया लेवल की अगर बात करो तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका, हर गांव को देखना पड़ेगा ये जजमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए. अगर आप मैथमेटिक्स लगाएंगे तो देश में 7 करोड़ डॉग्स हैं, और अगर पब्लिक स्पेसिस का देखने जाएंगे तो एक मोटा मोटी 60 से 70 लाख डॉग्स आपको होंगे. उनको अकोमोडेट करने के लिए आपको कम से कम 10 लाख शेल्टर्स चाहिए. 10 लाख, सॉरी, 1 लाख से लेके 50,000 शेल्टर्स चाहिए. वो शेल्टर्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. आप अब क्या करोगे, उनके लिए आप एक फंडिंग रिलीज़ करोगे, वो शेल्टर्स बनाओगे. हम कह रहे हैं ये सारा पैसा आप उन सोल्यूशंस में लगाओ जहाँ पे इनका सोल्यूशन पॉसिबल है. उनको राउंड अप करके अगर शेल्टर में डाल दिया, अगर 1000 कुत्तों को एक शेल्टर में डाला, अगर उसमें से एक को भी रेबीज निकला, वो एक आउटब्रेक हो सकता है. अगर वो एक कुत्ता बाकी 1000 कुत्तों को काटेगा, वो कुत्ते उन केयर टेकर्स को काटेंगे, वो केयर टेकर्स ऑलरेडी दूसरों के साथ एक्सपोजर में, वो एक आउटब्रेक हो जाएगा. गवर्नमेंट को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेंटेन करना. सो इट्स नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन. अगर आप उसके लिए पैसा असाइड कर भी रहे हो तो वो ना करके वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन पे पैसा एलोकेट करो, एंड दैट शुड बी अ गुड सोल्यूशन. तो अगर एनिमल्स को हम फिर भी उठा के, सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हमें उठाना ही है ये सारे एनिमल्स को, उनको वैक्सीनेट और स्टरलाइज करना ही पड़ेगा. तो हमारे जो टैक्स पेयर फंड्स है उसमें 3 गुना लग जाएंगे या 4 गुना लग जाएंगे, ताकि उनको स्टेरलाइज भी करो, वैक्सीनेट भी करो और उनको वहाँ शेल्टर्स में भी रखो. धन्यवाद.